पहले एक आर्टिकल समझते हैं। आर्टिकल 143 इट गिव्स पावर टू प्रेसिडेंट टू कंसल्ट टू सुप्रीम कोर्ट। नाउ व्हेन इट कम्स टू क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट which is of public importance, president seeks the opinion of supreme court. Supreme court can give its opinion, supreme court cannot give its opinion. However, supreme court is bound to give its opinion in pre-constitution treaties. However, Supreme Court's opinion is advisory on president. So recently balance of power between Raj Bhavan and elected state governments का जो केस का सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है, फाइव जज बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट अपना ओपिनियन देती है ऑन 14 पॉइंट्स प्रेसिडेंशियल रेफरेंस। इसका हाईलाइट ये था कि गवर्नर्स कैन नॉट indefinitely sit on bill and it is effectively outline pocket veto which has been granted to governors under Article 200. But Supreme five judge bench of Supreme Court rejects judiciary's power to impose rigid timelines on constitutional authorities. So पहला समझते हैं आर्टिकल 200 के अंडर क्या है कि बिल पास्ड बाय स्टेट लेजिस्लेचर goes to governor. Now, governor can give his assent, reserve bill for president's consideration. Third is it can withhold assent. And number four, return bill to the legislature for reconsideration. Now, Supreme Court said there is no option when governor withhold assent. Okay, so govern second Supreme Court बोलता है कि governor cannot simply refuse to sign a bill and keep it pending. मतलब आप पॉकेट वीटो का वो करके आप इंडेफिनिट पीरियड के लिए बिल को पेंडिंग नहीं रख सकते हो एंड इट इज आउटलाइन पॉकेट वेटो। सेकंड आता है फॉर ग्रांटिंग एसेट टू बिल गवर्नर enjoys discretion and it is not bound by the advice of council of ministers and which has been provided under article 163 for state legislature। थर्ड क्वेश्चन था कि जो कोर्ट कैन नॉट रिव्यू कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन बाय गवर्नर अंडर आर्टिकल 200 बट prolonged unexplained indefinite inaction by governor comes under the preview of judiciary। मतलब it comes under judicial review। फोर्थ क्वेश्चन आता है आर्टिकल 361 में there is personal immunity to president and governors means president and governors are not answerable to any court for performance of their duties। Now Supreme Court said कि Article 361 protects president and governor, not office of governor, from judicial review regarding constitutional inaction, pocket veto। फिफ्थ आता है कि अंडर आर्टिकल 200 एक्चुअली यूजेस द वर्ड कि गवर्नर को एक्शन लेना होगा एज सून एज पॉसिबल बट कोई फिक्स टाइमलाइन आर्टिकल 200 नहीं बताता है। सो सुप्रीम कोर्ट सेड कि इन अप्रोप्रिएट सुप्रीम कोर्ट सेड इट वुड बी इन अप्रोप्रिएट ऑफ जुडिशरी टू प्रिस्क्राइब अ रिजिड डेडलाइन। नंबर 6 आता है कि आर्टिकल 201 में प्रेसिडेंट गवर्नर रिजर्व अ बिल फॉर प्रेसिडेंट्स कंसिडरेशन। नाउ president's decision on a state bill either to assent or withhold assent on the bill doesn't come under judicial review on its merit। सेवेंथ आता है कि president कैन नॉट बी बाउंडेड बाई judicially prescribed timelines। मतलब judiciary cannot prescribe a time limit for president whether a president has to withhold assent or give assent or keep it pending। एथ क्वेश्चन आता है कि अंडर आर्टिकल 143 प्रेसिडेंट कंसल्ट टू सुप्रीम कोर्ट व्हेन इट कम्स टू क्वेश्चन ऑफ लॉ बट सुप्रीम कोर्ट सेड इट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर प्रेसिडेंट टू सीक ओपिनियन एवरी टाइम if bill is reserved under article 201। so it depends on president's subjective satisfaction। नाइन्थ क्वेश्चन आता है court cannot adjudicate on validity of the bill because before assent before before assent or it has become a law it was a bill and judicial review applies to laws only not bills। now question 10 आता है कि under article 144 supreme court has power to pass any order necessary to do complete justice। now supreme court rejected a concept deemed assent which means कि assuming bill passed if delayed। so supreme court says कि exercise of constitutional powers by governor or president does not substituted under article 142 because article 142 cannot be used to create legal fiction। okay it will be against separation of powers। number 11 क्वेश्चन आता है कि लॉ मेड बाय स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लेजिस्लेचर विदाउट एसेंट ऑफ गवर्नर कैन नॉट बी लॉ इन्फोर्स। 12 क्वेश्चन आता है आर्टिकल 1 अंडर आर्टिकल 145(3) मिनिमम जज बेंच फॉर डिसाइडिंग सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ शेल बी 5। 13 क्वेश्चन आता है कि अंडर आर्टिकल 142 कैन नॉट बी यूज टू ओवरराइड substantive constitutional provisions like
assent requirement, assenting a bill or withhold assent. आर्टिकल 14 क्वेश्चन आता है कि आर्टिकल 132 गिव्स सुप्रीम कोर्ट ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ओवर डिस्प्यूट बिटवीन यूनियन एंड स्टेट.